guys, welcome back to my channel. So I hope you all are doing great. At what time बाद I'm going to tell you guys how to do step by step wedding makeup look. तो मैं एक एक step आपको बताऊंगी. So the first step is to apply moisturizer. I'm going to use this Vaseline moisturizer. I know many of you will say this is body moisturizer, but this suits my face very well. Whenever we do makeup, so साथ में लिप बाम भी लगा लिया करो, क्योंकि लिपस्टिक एंड में लगनी होती है, तो तब तक get your lips moisturized. So here I'm using L'Oreal concealer to hide my dark circles and जो around the mouth थोड़ी सी pigmentation हमें होती है वो hide करने के लिए, right? Now I have taken sponge and जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया है वहीं पे हम टैप करके उसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से. ऊपर नीचे हमने फालतू में ब्लेंड नहीं करना है. जहाँ पे हमें डार्क सर्कल्स हैं या जहाँ पे पिगमेंटेशन है, ऑफ कोर्स विल ब्लेंड इन दैट पार्ट ओनली. Now the second step is foundation. Here I'm using Estee Lauder foundation and it is the best foundation I have used. Of course it is expensive, but flawless. You can clearly see. Like matching my skin tone very well. Blending is the key, guys. Like the more you blend, the flawless your base will look. Now here I'm using Ricoh lip and cheek tint. बहुत ही स्मूथ है इसका टेक्सचर, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड डैब डैब करके हम ब्लेंड करेंगे. विल नॉट ड्रैग इट बिकॉज हमने फाउंडेशन खराब नहीं करना, राइट? Now moving on to the eyes. Here I'm using my Pretty All Set palette number 2. फर्स्ट शेड जो हम उठाएंगे हमेशा लाइट शेड उठाएंगे. Here I'm using light brown shade ताकि हम स्कल्प्ट कर पाए, हम शेप दे पाए अपनी आईज को. सो हम अभी भी इसको बहुत आराम से ब्लेंड करेंगे. ब्लेंडिंग करते हुए हम टाइम लेंगे, दैट इज ओके, बट पैची नहीं दिखना चाहिए हमारा आई मेकअप. सी हाउ आई एम डूइंग इट इन अ सर्कुलर मोशन. जस्ट ब्लेंड इट प्रॉपरली. Now I have taken dark brown shade, brown and black का mixture. So इसको हम end of the corner पे लगाएंगे to add more depth to my eyes, ताकि हम और अच्छे से शेप दे पाएँ अपने आईज को. एंड इसको भी हम लाइट ब्राउन के साथ अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन दोनों अलग अलग ना दिखें बिल्कुल भी. Now completing my look with the blue kajal pencil of Swiss Beauty. I'm not using black liner or black kajal. मैं blue use कर रही हूँ because my outfit is blue. So इससे एक बहुत अच्छी आई लुक क्रिएट हो जाएगी हमारी. सी हाउ आई एम डूइंग इट. जैसे हम लाइनर लगाते हैं ना, हमने वैसे ही लगाना है. नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन दिस गाइस. Now I'm using small blending brush to smudge the edges. Now from this palette only I am going to use silver shimmer on my eyelids only because we are getting ready for a wedding, right? So थोड़ा सा shimmer add करना तो बनता है, so हमारी look एक wedding look आ पाए. So dab it on your eyelid very gently and see how it looks. It looks so pretty on my eyes. Look at it, guys. So, अगर कोई भी like if anyone is watching this right now, अगर कोई भी ये look create करता है, so please tag me, guys. Yeah, truly, I'll be very happy. Now here I'm using mascara. If any one of you want to apply eyelashes, go for it. मेरी जो eyelashes है वो already बहुत बड़ी हैं, तो it's better for me to apply mascara only and I like that thing. Now fill your eyebrows correctly and properly. Then after that brush it properly. So जो extra हमने जो apply कर लिया वो निकल जाए. For the blusher, here I am using Forever 52 blusher palette and मैंने nude shade and pink shade को mix करके लगा रही हूँ. And look how flawless it looks. Dab it gently. Just कोई भी product आप apply करोगे आराम से dab करके लगाना है because हमारा foundation ना खराब हो उससे. Just that. Look how pretty it looks. जस्ट वाओ गाइस. मैं कोई भी प्रोडक्ट मैं इधर यूज़ करती हूँ ना आप लोगों के सामने, जस्ट नो इट,
I like that product, that's why I'm using it in front of you. And second last is my favorite lipstick, Mars. I have talked about it a lot on my YouTube channel. लास्ट अगर मेरी रील किसी ने देखी होगी तो मैं उसमें भी यही अप्लाई कर रही हूँ. वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक टू बी ऑनेस्ट. Just follow your lip line, don't overline it. I mean, it depends upon the person to person, but it looks good naturally. And here I'm using Sugar highlighter palette, and look how flawless it looks. कैसे shimmery shimmery, right? So हम इसको अपने cheekbone पे लगाएंगे and the tip of your nose or wherever you like it. And here I'm ready. Now I'll remove my jacket and show you the full look. बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे. बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे. And if you guys like the video, please do let me know in the comment section and let me know which video you will like to see. Bye bye. Subscribe for more. Take care, guys.